Hello students, welcome to MDC Learning. I'm going to teach you the subject Financial Accounting, and the topic which you are learning right now is underwriting of shares and debentures. As you know, what is my patent dialogue? तकियानुसी कलाम मेरा क्या है? Read the problem, understand the problem and solve the problem. चलो, let's read the problem. Problem number 10. Jupiter Limited issued 10,000 shares of rupees 10 each. The entire issue was underwritten as Sun 5,000, Moon 3,000 and Star 2,000. See, it is 10,000. 5 plus 3 is 8, 8 plus 3 is 8 plus 2 is 10. The firm underwriting was 1,500 and 500. ओके तो चलो, हमें ये सबसे पहले तो मुझे पता है मुझे क्या करना है. Yes, 5,000, 3,000, 2,000. Total comes to 10,000. And what is the ratio? The ratio is very simple. 4 zeros gone. So 5:3:2. This one is very simple. The firm underwritten was 1,000 shares. For Sun, Moon 500 and Star 500. The share applied were 9,000. See, total application you have received was for rupees 9,000. The following has been marked application form including firm underwriting. Now see, this is firm underwriting is included. Okay. Now see, following is a mark application including firm underwriting. That means in this mark application, firm underwriting is included. Are you getting it? Yes or no? इसका मतलब समझ में आ रहा है ना बच्चों? क्या है इसका मतलब? कि firm underwriting included है. Are you getting me? करेक्ट ना? द फर्म अंडरराइटिंग इज इंक्लूडेड. सी, लास्ट प्रॉब्लम जो हमने किया था उसके अंदर नहीं बोला था, खाली बोला था फॉलोइंग इज द मार्क्ड एप्लीकेशन. खाली मार्क्ड एप्लीकेशन बोला था, हमने उसे डायरेक्टली मार्क एप्लीकेशन में डाला था और इसके अंदर हमने फर्म अंडररिटन नहीं लिया था. आर यू गेटिंग इट? और ये वाले प्रॉब्लम में आप देखोगे तो इन्होंने डायरेक्टली बोला है कि मार्क एप्लीकेशन के अंदर फर्म written included. That means this 3,500 is including 1,000. This 1,400 is including 500 and 1,600 is including 5. So Sun का mark application हो गया 2,500, Moon का mark application हो गया 900 और Star का mark application हो गया 1,100. That is very simple. अगर ये अभी भी आपको नहीं आ रहा है तो प्लीज स्टार्टिंग से प्रॉब्लम्स देखना चालू करिए. करेक्ट? सो दिस इज कमिंग टू 2,500. This is coming to 900 and this is coming to 1,100. So total mark application is how much बच्चों? The total mark application is 2,500 plus 900 plus 1,100. That comes to 4,500. वेरी सिंपल प्रॉब्लम. खाली यहाँ पे ये चीज बताने के लिए ली थी. अगर आप लोग ने टेक्स्ट बुक देखा होगा तो पिछले प्रॉब्लम में टेक्स्ट बुक के अंदर मार्क एप्लीकेशन फर्म अंडरराइटिंग इज इंक्लूडेड इन मार्क एप्लीकेशन और बहुत जनों के दिमाग में आएगा सकीना मिस ने रॉन्ग किया. सकीना मिस ने रॉन्ग नहीं किया. सकीना मिस हैज फॉलोड द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द टेक्स्ट बुक. आर यू गेटिंग इट? ओके तो आपको ये बात, अकाउंट्स इज एन इनपरफेक्ट साइंस, आपको 11th स्टैंडर्ड में सिखाया गया था. यू नो, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू आर इंटरप्रिटेटिंग इट. आई हैव इंटरप्रिटेटेड इट. नहीं बोला गया इसका मतलब नहीं इंक्लूडेड है. ओके सो नाउ अनमार्क एप्लीकेशन. देखो टोटल एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ है 9,000 और ये 2,000 हमारा ये है इंक्लूडिंग बोला है. एवरीथिंग शेयर अप्लाइड एंड ऑल एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. और वैसे भी अगर 2,000 शेयर है तो हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा. ओके सो
yes 9,000 shares, 9,000 shares, उसमें से 2,000 is a firm underwritten और 4,500 was marked application. बचा कितना? 2,500. This 2,500 is unmarked application which will be divided in the ratio of 5:3:2. Am I correct? चलो 5 plus 2 is 7, 7 plus 3 is 10. So 2,500 divided by 10, that is coming to 250. 250 into 2 is 500. Then 250 into 3 is 750. Then 250 into 5 into 5 is 1250. 1250. चलो again balance. Yes, what is the balance? Minus 2,500, that is 1250. यहाँ पे 2,100 minus 750, that is 1350, and here it is coming to 400. The total will come to 3,000. Let's count it. 1250 plus 1350 plus 400. मैंने आपको बोला था हमेशा क्रॉस कर चेक करते रहना. आ गया ना 300. अब हम इसमें से माइनस करेंगे लेस. व्हाट इज लेस? फर्म अंडर राइटिंग. करेक्ट, फर्म अंडर राइटिंग. चलो फर्म अंडर राइटिंग कितना है? इसका 1000 हम लोगों ने देखा है, इसका 500 एंड इसका भी 500. This was a very easy problem. Why I took it, I don't know it, but only the thing to explain you compared to the last year LM, because later on I saw it. तो मेरे को लगा होगा बच्चों को लगा सकीना मिस ने रॉन्ग किया है. So I just want to clarify it. It is coming to 250. 1350 minus 500, that is coming to 850, and this is coming to negative 100. Correct, and this will come to 1000. See 9,000 application आपने रिसीव किया था. Now 1000 has to divide it. Now this again you will have less. क्या लिखना है हमें? Credit of star adjusted. करेक्ट. चलो क्रेडिट ऑफ स्टार एडजस्टेड कितना है? स्टार का क्रेडिट 100 रुपीज़. 100 शेयर्स. 100 शेयर्स को हम कैसे रेशियो में डिवाइड करेंगे? 5:3. सो दैट इज 100 डिवाइड बाय 8. करेक्ट ना? इनटू 5, दैट इज कमिंग टू 62.5. मतलब दिस विल कम टू 63. So this will become how much? 100 minus 63, that will come to 37. So this person will take 37 shares. Again you will have balance. So balance will be 250 minus 63, that comes to 187. 850 minus 37, that comes to 830. See, this is the liability which the undertakers are going to take, and this is 100% 1000. See 893 plus 187.
So this is the liability which the underwriters are going to take it. Are you getting it? Now what are you going to do it? Now you're going to add. What you're going to add? Firm undertaking. Are you getting it? Firm undertaking. So this was 1000, this was 500, this was 500. The total was coming to 2000. So this is 2000 shares are the shares which underwriters are going to buy from you. Liability. Okay, so Sun will give the money of 1187 shares. This will come to how much? 813 plus 500, that is 1313, and this person will have 500, and this total should come to 3000. Now let's see, correct it. 1313 plus 1187 plus 500. Correct, students? Now students, my one point is that you can remove the commission. Am I correct? You can do the journal entries. You can remove the due and drawn statement from this. That is your work. You're going to practice it. Okay, बच्चों, चलो, thank you, take care, enjoy learning. Again मैंने repeat कर रही हूँ, journal entries आप लोग खुद कर लीजिएगा, ड्यू स्टेटमेंट आप खुद बना लीजिएगा, अंडरराइटर का जो ड्यू स्टेटमेंट है. नाउ द प्रॉब्लम इज नॉट सेइंग एनीथिंग, सो यू विल अज्यूम दैट द कमीशन इज 5%. The commission will be 5%. चलो, बाय.